हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। এই কথাবোৰত দেশৰ সাধাৰণ মহিলাৰ কষ্টৰ কথা আছিল। দূৰ দূৰণিৰ গাঁওবোৰত জল সংকটেৰে সংগ্ৰাম চলোৱা মাতৃ আৰু ভগ্নীসকলৰ দুখ দুৰ্দশাৰে ভৰা আছিল। এইখিনি সময় আছিল সাধাৰণ লোকৰ জীৱন সংগ্ৰামেৰে ভৰা। গুজৰাটৰ খৰাং পীড়িত অঞ্চলসমূহৰ তেনে দুৰ্দশাক নিজৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কালছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিচেই ওচৰৰ পৰা দেখা পাইছিল। সেই কাহিনীবিলাকৰ মূল কথাটো আছিল গ্ৰামীণ মহিলাসকলৰ জীৱনৰ বহুমূলীয়া সময় পানী সংগ্ৰহ কৰোঁতেই ব্যয় হৈছিল। ইয়াৰ বাবে মহিলাসকলৰ জীৱিকা, শিশুহঁতৰ লালন পালন, শিক্ষা দীক্ষা আদি এৰা পৰিছিল। मुझे आज भी याद है श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और पहले दिन से ही एक के बाद एक जो उस समय गुजरात की समस्याएं थी उसको हल करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। आपको याद होगा कि उन दिनों गुजरात में, सौराष्ट्र में, नॉर्थ गुजरात में बहुत सी जगहों पे टैंकर से पानी की सप्लाई होती थी। इनफैक्ट कई साल ऐसे थे, मुझे आज भी याद है, कि ट्रेन से पानी की सप्लाई होती थी। डेली 2 ट्रेन चलती थी और उससे पानी सप्लाई होती थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे आज भी याद है, उन्होंने एक बात कही कि हम समस्याओं को मैनेज करते हैं, पानी की जो ये समस्या है मैं इसको हमेशा के लिए हल करना चाहता हूँ। 2001 চনত গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মহিলাসকলৰ সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিবলৈ সংকল্প লৈছিল। কচ্ছৰ মৰুভূমিয়েই হওক অথবা সৌৰাষ্ট্ৰৰ গাঁও, মহিলাসকলে পানীৰ বাবে কেইবা মাইল যাবলগীয়া হোৱাটো তেওঁ দেখা পাইছিল। নিজৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ সেই যাত্ৰাত প্ৰখৰ ৰ'দৰ বাবে ভৰিৰ তলুৱা ফুটোৱা সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ এই দুৰ্দশা তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী মোদীয়ে শাসনৰ বাঘজুৰি হাতত লৈয়ে 2001 চনত পানীৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছিল আৰু মাতৃ ভগ্নীসকলৰ জীৱন সুচল কৰিবলৈ ৱাছমো নামৰ সংস্থা এটা গঠন কৰা হ'ল। দেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পানী সমিতি গঠন হ'ল, যিবিলাকে কেইটামান বছৰৰ পাছতে প্ৰতিখন গাঁৱলৈ পানী যোগানৰ দায়িত্ব ল'বলৈ ল'লে। পানী সমিতিসমূহৰ এই কৃতিত্বপূৰ্ণ প্ৰয়াসক 2009 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ৰাজহুৱা সেৱা পুৰস্কাৰেৰে সন্মানিত কৰা হয়। मुख्यमंत्री बनने से पहले सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो उनका था एक परिव्राजक की तरह रहा, जहां उन्होंने यायावर की तरह घूमते हुए समाज को के विभिन्न पक्षों को देखा, उनके दर्द को महसूस किया। कर्मभूमि गुजरात होने के नाते और जन्मभूमि गुजरात होने के नाते गुजरात का एक बहुत बड़ा भाग जो राजस्थान से लगता हुआ है, उस भूभाग की भौगोलिक परिस्थितियां, पानी की कमी और पीने के पानी की पूरी उपलब्धता न होने के कारण से समाज पर पड़ने वाले उसके दुष्प्रभाव, महिलाओं के जीवन में उसके कारण से होने वाली कठिनाई को बहुत करीब से देखा था, उस दर्द को महसूस किया था। সেই চোৱা সময় পাৰ হৈ যোৱা বেছিদিন হোৱা নাই, যেতিয়া নেকি গুজৰাটৰ নৱছাৰী, ভুজ, সৌৰাষ্ট্ৰ, ছুৰট জিলাৰ ভালেমান এলেকাত মহিলাসকলে সপ্তাহত এদিনহে পানী পাইছিল। পানীৰ বাবে এই সংগ্ৰামৰ সেই সময়ছোৱা গুজৰাটে আজিও পাহৰিব পৰা নাই, যেতিয়া নেকি ৰাতিয়েই মহিলাসকলে কুঁৱাৰ পানীৰ বাবে দীঘলীয়া শাৰী পাতিব লগা হৈছিল। অকলে কুঁৱা গৈ পোৱাটো বিপদসংকুল আছিল আৰু মনত ভয়ৰ ভাৱো আছিল। অঞ্চলটোৰ কাপোৰ কানি পুখুৰীবোৰত ধোৱা হৈছিল। ইয়াৰ গাঁৱৰ মহিলাসকলৰ পাৰস্পৰিক বিবাদবোৰো পানীকেন্দ্ৰিক আছিল। ভদগামৰ জনতাই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে কয় যে যেতিয়া ৱাছমোবিলাকে
2000 জনবসতিৰ ভাদগাম পৰিদৰ্শন কৰিছিল, তেতিয়া গাঁওখনৰ মহিলাসকলে তেওঁলোকক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে অভিযোগৰ বাবেও তৎপৰ হৈছিল। কিন্তু ৱাছমোৱে বিলম্ব নকৰিলে। গাঁওখনৰ প্ৰতিটো ঘৰলৈ পানী যোগানৰ বাবে প্ৰায় 24 লাখ টকাৰ বাজেট প্ৰস্তুত কৰিলে। জনতাৰ অংশীদাৰিত্বৰে উলপাদ তহচিলৰ ভাদগামৰ 372টা ঘৰৰ সকলোলৈকে নলযোগে পানী যোগান ধৰা হ'ল। टाकी लगाई हुए है ना, उधर से कनेक्शन दिया है, उधर घर घर नल लगवाया है और सुविधा अच्छी है, दूर दूर तक पानी भरने नहीं जाना पड़ता। પાણીની સમસ્યા હતી પહેલાં, ફિર નળ આવ્યા તો પાણીની કમ થઈ ગઈ। 2000 চনৰ আগৰ আহমেদাবাদৰ মাজেৰে বৈ যোৱা সাবৰমতী নদীৰ কথাই স্মৰণ কৰক। মহানগৰখনৰ আৱৰ্জনা কঢ়িয়াওঁতে সাবৰমতী নদী নলালৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছিল। যিখন নদীৰ দুয়োটা পাৰ আৱৰ্জনাৰ পাহাৰ সদৃশ হৈছিল, আজি গান্ধীজীৰ সাবৰমতী আশ্ৰমলৈ অহা সকলো ৰাজনৈতিক নেতা আৰু গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে সাবৰমতী ৰিভাৰ ফ্ৰণ্টৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ যায়। মোদীৰ সংকল্পৰ বাবে কেৱল সাবৰমতীৰ দৰে নদীবোৰত বছৰটোৰ সকলো সময়তে পানী সুনিশ্চিত কৰাই নহয়, বৰঞ্চ নদীয়ে পুনৰ জীৱনো লাভ কৰিলে। 2017 চনত দেশৰ প্ৰথমখন চি প্লেনে এই সাবৰমতীৰ পৰাই উৰা মাৰিছিল। साबरमती फ्रंट जो है एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है और जो रेड जोन्स थे वो अभी अब वहाँ पानी की दिक्कत नहीं है, ग्राउंड वाटर इज अवेलेबल कोपियस इन दी एबंडेंस। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो वाटर मैनेजमेंट के एक अद्भुत मॉडल की तरफ इशारा करता है। গুজৰাটৰ নৱছাৰী জিলাৰ বানগী গাঁৱত পানীৰ সহজলভ্যতাই গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ জনসাধাৰণক আৰ্থিকভাৱেও সমৃদ্ধ কৰিলে। পানীৰ সংকটৰ পাছত 1994 চনৰ পৰাই গাঁওখনত সামূহিক পানীৰ বাবে কাম আৰম্ভ কৰা হৈছিল। গাঁওখনত পুখুৰী খান্দিবলৈ লোৱা হৈছিল। সজলধাৰা আঁচনিয়ে গাঁওখনত পানীৰ প্ৰাপ্ততা সুনিশ্চিত কৰাৰ উপৰিও খেতিৰ লগতে পশুপালনৰ জৰিয়তে জীৱিকাৰো উপায় ওলায়। চাওঁতে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ ঘৰবোৰ দুগ্ধ উৎপাদনৰ জীৱিকা মাধ্যম হৈ উঠিল। ইয়াৰ ফলত পাছত গৈ গুজৰাটত শ্বেত বিপ্লৱ শক্তিশালী কৰাত যথেষ্ট সহায়ক হয়গৈ। জল জীৱন মিছন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে প্ৰায় 450টা পৰিয়াল থকা এই গাঁওখনত ঘৰে ঘৰে পাইপ যোগে পানী যোগানৰ সুবিধা আহিল। पशुपालन बड़ा है। पानी उपलब्ध होने से, पानी मिलने से, टाइम से पानी मिलने से लोगों ने खेती के साथ दूसरा व्यवसाय जो पसंद किया वो पशुपालन है, और पशुपालन के माध्यम से उन्होंने एक दूसरी आमदनी इनकम डेवलप की है, और जो उसके घर खर्च में उनको मदद करती है, और जो खेती की किसानी की जो आमदनी होती है वो उनके पास जमा रहती है। জল সংকটৰ বিষয়টো উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছিল, চৰকাৰে জল জীৱন মিছন আৰম্ভ কৰি দিছে। আমাৰ প্ৰতিটো ঘৰলৈ পানী কেনেকৈ পঠিওৱা হ'ব, প্ৰতিডৰা খেতিলৈ পানী কেনেকৈ যোগান ধৰা হ'ব, সেইটো মিছনে সুনিশ্চিত কৰিব। ৱাটাৰ গভৰ্নেন্সৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গুজৰাটৰ কচ্ছৰ বালিময় এলেকাবোৰত সেউজেৰে ভৰাই তুলিছিল। 2019 চনত এই ৱাটাৰ গভৰ্নেন্সেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সমগ্ৰ অঞ্চলটোক সংযোজিত কৰিলে আৰু জলশক্তি মন্ত্ৰালয়ে পানীৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে ইয়াৰ প্ৰয়াস ক্ষিপ্ৰতৰ কৰি তুলিলে। हमारे संस्थापकों ने, दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी ने उसके मार्ग को भी एक स्पष्ट रूप से डिफाइन किया था कि समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला करके उसको समर्थ, सबल और सशक्त करके ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के माध्यम से हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, और उसी दर्शन पर आधारित माननीय प्रधानमंत्री जी के सारे कार्यक्रम हैं। মোদী চৰকাৰে 3.5 লাখ কোটিৰো অধিক টকা এই মিছনৰ বাবে ব্যয় কৰিবলৈ সংকল্প ল'লে। ইমানেই নহয়,
2024 চনৰ ভিতৰত এই কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈও প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'ল। অৰ্থাৎ স্বচ্ছ ভাৰতৰ পাছতে জল জীৱন মিছন সামাজিক অংশীদাৰিত্বৰ অন্য এক আন্দোলন হিচাপে গঢ় লৈ উঠিল। शहर से बिलोंग करती हूँ और बाई चांस मेरी जो शादी है एक गांव में हो गई और गांव में आने के बाद मुझे पता लगा कि लोगों की कैसी मारामारी थी पानी को लेकर। 2002 में मेरी शादी थी और उस टाइम पे मैंने इस चीज़ को फेस किया था। मटका लेकर जाना, महिलाओं का आपस में गाली गलौज, लड़ना, लाइन लगाना और तो और दूर कुओं से पानी लेकर आना, पीने का अलग पानी लेकर आना, घर में कपड़े धोने का अलग पानी लेकर आना, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। जल जीवन मिशन के तहत जो गांव में टूटियां लगी हुई हैं उनमें साफ सुथरा पानी आता है जी। और जो पहले दिक्कत थी कि रात को औरतें 2-2 घंटे 4-4 घंटे लाइन में लगी रहती थी, उसके लिए अब संकट दूर हो गया। औरतों का जी अब सुबह शाम 3 टाइम पानी आता है जी। पहले पानी की बहुत समस्या होती थी, खेत जाना पड़ता था, कुएं से लाना पड़ता था, मम्मी वगैरह बहुत परेशान होती थी। अब जल जीवन मिशन के कारण घर घर पानी पहुंच रहा है और पानी पाइपलाइन लग गई है तो पानी भी पर्याप्त आ जाता है। চাওঁতে চাওঁতে গাঁৱৰ পিছত গাঁও জুৰি পানীৰ পাইপৰ জাল স্থাপনৰ কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল। ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত প্ৰদেশবোৰে প্ৰতিটো গ্ৰামীণ পৰিয়াললৈ পানীৰ নল সংযোগ প্ৰদানৰ বাবে আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি লৈছে। দুৰ্গম পাহাৰ অঞ্চলবোৰত পানী কঢ়িওৱা মহিলাসকলৰ জীৱন বিপদসংকুল আছিল। কিন্তু আজি জল জীৱন মিছনৰ জৰিয়তে নলৰ যোগেদি পানী তেওঁলোকৰ ঘৰ পৰ্যন্ত উপলব্ধ হ'বলৈ লৈছে। হিমাচল প্ৰদেশৰ সোলন জিলাৰ দাউদি গাঁৱৰ যশোদা দেৱীৰ বয়স এতিয়া 85 বছৰ। পানীৰ বাবে কিমান যাতনা ভুগিব লগা হৈছিল সেই বিষয়ে যশোদাই নিজ মুখেৰে কৈছে। ৰাতি শেষ নহওঁতে পানী যোগাৰ কৰিবলৈ বুলি পাহাৰে পাহাৰে বগাই গৈহে ক'ৰবাত অলপ पानी পোৱা গৈছিল। बहुत दूर से लेते थे, रात को भी नींद नहीं आनी जे कहीं बावड़ी में मिल जाए 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठ के मिट्टी के बर्तन, फटे हुए बर्तन, पानी नाले में मिलता था। पर अब तो जितना मर्जी उतना खींचते, कपड़े रोज धोती है। हमारे तो 1 हफ्ते में धोने पड़ते थे कपड़े भी, फिर लगता था टाइम खड्ड में जाने को। आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश जो है पूरे देश भर में जल जीवन मिशन में हर घर को नल और नल में शुद्ध जल, ये इस अभियान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश वैसे प्रदेशों में से है जहां जो केंद्र ने जो अच्छा काम करने वाले प्रदेशों के लिए जो इंसेंटिव रखे थे, उस इंसेंटिव की सारी जो किस्तों को हमने जो है हिमाचल प्रदेश ने अवेल किया है। দেশৰ সুদূৰ পূৰ্বোত্তৰৰ ৰাজ্যসমূহতো দুৰ্দশা কম নাছিল। পানীৰ বাবে ইটো পাহাৰৰ পৰা সিটো পাহাৰলৈ বগাই যোৱাটো আছিল অতিশয় কষ্টসাধ্য। কিন্তু আজি পৰিস্থিতি সলনি হৈছে। পূৰ্বোত্তৰৰ ৰাজ্যসমূহে জল জীৱন মিছনত নিৰ্ধাৰণ কৰা লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিছে। অৰুণাচল প্ৰদেশত এনেকুৱা দৃশ্যই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ঘৰবোৰত নলেৰে পানীৰ সংযোগ প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে প্ৰায় 2000 কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে। जहाँ तक पूर्वोत्तर राज्यों का प्रश्न है, सिक्किम मैंने आपके सामने उदाहरण रखा कि सिक्किम में लगभग 80% घरों तक पीने का पानी पहुँच चुका है। लेकिन सिक्किम के अतिरिक्त भी 7 पूर्वोत्तर राज्य, असम जो मैंने कहा कि जहाँ अभी चुनौती बड़ी है, लेकिन शेष बचे हुए 6 राज्यों में से 6 राज्यों में बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। পৰিসংখ্যাই সাক্ষ্য দিয়ে যে 2019 চনৰ 15 আগষ্ট পৰ্যন্ত দেশৰ 19 কোটি পৰিয়ালৰ ভিতৰৰে মাত্ৰ 3 কোটি 23 লাখ পৰিয়াললৈহে নলযোগে পানীৰ সুবিধা আছিল। শেহতীয়া তথ্য অনুযায়ী এতিয়া প্ৰায় 8 কোটি 16 লাখ পৰিয়াললৈ নলযোগে পানীৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে। ৰাজ্যসমূহৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে গোৱা, তেলেংগানা, আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ, পণ্ডিচেৰী আৰু দমন দিউ আদিয়ে 100% ঘৰলৈ নলযোগে খোৱা পানী যোগান ধৰিব পাৰিছে। हमने पिछले इस 21 महीने के कालखंड में 4 करोड़ और 85 लाख कनेक्शंस देने में सफलता प्राप्त की है।
जो आंकड़ा 3 करोड़ 23 लाख था वो बढ़कर के 8 करोड़ 15 लाख का हो चुका है, को पार कर चुका है। और रोजाना लगभग हम 1 लाख कनेक्शंस औसत के दर से कनेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और आन केइखनमान राज्यत जापानीज एनकेफेलाइटिसर फলত हाजारों संख्यात निरपराधी शिशुर जीवन शेष হ'ব লগা হৈছিল। সেইবিলাক ৰাজ্যত অগ্ৰাধিকাৰৰ ভিত্তিত নলেৰে পানী যোগানৰ কাম ক্ষিপ্ৰগতিত চলিছে। পৰিসংখ্যাৰ লেখেৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ 23,000ৰো অধিক গাঁৱত নলযোগে পানী যোগানৰ কাম ক্ষিপ্ৰগতিত আগবাঢ়িছে। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰায় সকলো স্কুল আৰু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত জল জীৱন মিছনৰ যোগেদি নলেৰে পানী যোগান আৰম্ভ হৈছে। এতিয়ালৈ দেশৰ 7.5 লাখৰো অধিক স্কুলত আৰু 8 লাখ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত নলযোগে বিশুদ্ধ পানী শিশুহঁতে পান কৰিবলৈ পাইছে। हमें स्कूल जाने में भी काफ़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि पानी भरना होता था तो लेट हो जाते थे स्कूल जाने के लिए। तो घर वाले कहते थे पानी भर के लाओ, तो वो लाने के चक्कर में हमारा स्कूल मिस हो जाता था। इस वजह से हमारी पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और अब जो है हमारे घर में नल का लग चुका है, 2 टाइम पानी आ रहा है, सुबह शाम। हमें पानी लेने के लिए काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता था, कभी दरिया में, कभी बोली में, कभी कहीं हमें जाना पड़ता था। तो हमें बहुत परेशानी हुआ करती थी। लेकिन हमारे घर में कोई अगर गेस्ट भी आ जाए ना, हमें सबसे पहले बस यही टेंशन थी हम पानी की मैनेजमेंट कैसे करें। चलो पानी तो लाना हमारी मजबूरी है, हमें तो जाना ही है, लेकिन कई बार हमें डर भी लगता था रास्ते में कि अब शाम हो चुकी है, कैसे हम जाएं। পিছপৰা জিলাসমূহৰ সন্দৰ্ভত আকাংক্ষী জিলা কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত 117খন জিলাত জল জীৱন মিছনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে। এই মিছন ঘোষণা কৰাৰ সময়ত মাত্ৰ 7% ঘৰতহে নলেৰে পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা আছিল। কিন্তু শেহতীয়া তথ্য অনুযায়ী 31.37% ঘৰত নলযোগে পানী যোগান ধৰা হৈছে। पहले बहुत परेशान थे पानी में, कम से कम 10-15 साल पहले से, जिसके बाद में नल पे आते थे, बहुत गंदा पानी रहता था वहाँ। अब जल जीवन मिशन से हम बहुत फ़ायदा है और पानी पूरा लाभदायक है। बुंदेलखंड वासियों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि बुंदेलखंड में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ गर्मियों में तो ये हालत हो जाती है कि दूर दराज से पानी लाना पड़ता है और ज़मीन में नल भी जवाब दे जाते हैं। इस वजह से अगर ये घर घर योजना जल मिशन तहत के से पहुँच रही है तो वो मेरी समझ में कि ये वरदान साबित होगी बुंदेलखंड के लिए। জল জীৱন মিছনত চৰকাৰে ৱাটাৰ কোৱালিটি মেনেজমেণ্টত বিশেষ জোৰ দিছে। পানীৰ নিৰ্ধাৰিত গুণ সুনিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে সমগ্ৰ দেশত 2000ৰো অধিক পৰীক্ষাগাৰ স্থাপন কৰা হৈছে। যিকোনো লোকে নিজৰ ঘৰৰ পৰাই তেওঁৰ ঘৰলৈ অহা পানীৰ গুণাগুণ পৰীক্ষা কৰাই ল'ব পাৰে। अगर हम चाहें कि हम अपना पानी टेस्ट करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये एक फील्ड टेस्टिंग किट है जो हम गांव में अक्सर लोगों को बांटते हैं, अपने कंज्यूमर्स को, ताकि वो अपना पानी खुद टेस्ट कर सके। उसमें क्या होता है, आपके एक निशान बना हुआ है इस फील्ड टेस्टिंग किट में। आपने वहां तक अपना पानी, जो ताज़ा पानी है, उस पानी को लेके उसको भर के और कहीं अंधेरी जगह पे रखना है जहाँ पे सीधी सनलाइट ना लगे। 48 घंटे तक, 24 से 48 घंटे आप रख सकते हैं। उसके बाद आपने उस पानी को देखना है कि अगर वो पानी पीलेपन पे है तो समझिए आपके पानी में किसी तरह का कोई बैक्टीरिया नहीं है और पानी बिल्कुल सेफ है पीने के लिए। নমামি দেৱী নৰ্মদে আৰু নমামি গংগে যোজনা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নদীৰ প্ৰতি থকা গভীৰ আস্থাৰ উদ্ঘোষণা। নমামি দেৱী নৰ্মদেৰ শুভাৰম্ভ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নৰ্মদা সেৱা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল, যাতে নদীসমূহৰ সংৰক্ষণৰ বাবে সামাজিক দায়বদ্ধতা গঢ় লৈ উঠে। মন কৰিব, 60ৰ দশকত আৰম্ভ কৰা চৰ্দাৰ সৰোবৰ প্ৰকল্পটো বহু বছৰ ধৰি ওলমি আছিল। কিন্তু গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ লগে লগে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই প্ৰত্যাহ্বান নিজৰ হাতত ল'লে আৰু এই প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ কৰি দেখুৱালে। চৰ্দাৰ সৰোবৰ প্ৰকল্প লাখ লাখ কৃষকৰ বাবে আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হৈ উঠিল। मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में जो डिफरेंसेस थे तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए फिर नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाई गई, जिन्होंने फिर इसके जो पैरामीटर्स हैं, जैसे ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उसमें स्टोरेज कितना होना चाहिए, पानी का बंटवारा कैसे होना चाहिए, ये सब उन्होंने डिसाइड करके 1979 में उन्होंने अपना
फाइनल डिसीजन दे दिया। ऐसे कामों को करना हमारे फेडरल पॉलिटी में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। सरदार सरोवर की अहम भूमिका रही है। आपको मालूम है कि सरदार सरोवर विवादों से घिरा हुआ प्रोजेक्ट था। कई तरह की समस्याएं थी उसमें, और इसको जो है वो इसका पूरा होना जल क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। গংগা যমুনা নৰ্মদাৰ দৰে ডাঙৰ ডাঙৰ নদীবোৰৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সৰু আৰু উপনদীবোৰকো নিৰন্তৰ নিৰ্মল কৰি ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। নদীবোৰক পৰস্পৰ সংযোজিত কৰা আঁচনিখনৰ জৰিয়তে মধ্যপ্ৰদেশ আৰু গুজৰাটৰ বহু লাখ একৰ খেতি পথাৰত पानी जुगान धरा हुआ। कच्छ के एरिया में देखिए कि जहाँ पर लोगों को पानी क्या है उसकी पता ही नहीं थी, उस एरिया में भी इसकी जो ड्रिंकिंग वाटर और जो पानी की जो सुविधाएं हैं वो उनको मिलने लगी हैं। वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनका। जो ये वाला जो था कि जैसे चेक डैम्स वगैरह बनाने का और जो ये जो उनकी जो स्कीम्स थी, वो स्कीम्स में काफ़ी फ़ायदा रहा है, क्योंकि उससे जो खास करके जो सौराष्ट्र और इस तरीके के जो इलाके हैं जहाँ पर कि पानी का बड़ा स्रोत नहीं है, तो वहाँ पर नदियों में चेक डैम बना के कम्युनिटी लेवल पे छोटा छोटा इरिगेशन वगैरह डेवलप करना, वो एक अच्छा प्रावधान था और उसके अच्छे फायदे भी दिख रहे हैं। 2014 চনত স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কন্যা আৰু মাতৃসকলৰ আহুকালবোৰ আঁতৰাবলৈ সংকল্প লৈছিল। 2019 চনত মুকলিত শৌচ কৰাৰ পৰা দেশখন মুক্ত হৈ উঠিল। সেইটো স্পৃহাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৃঢ় সংকল্পৰ আধাৰত প্ৰতিটো ঘৰলৈ বিশুদ্ধ পানী যোগানৰ সপোনো সাকাৰ হ'বলৈ লৈছে। আজি নতুন ভাৰতে কেৱল সপোনকে দেখি থকা নাই, বৰঞ্চ তাক সাকাৰো কৰিবলৈ লৈছে।